sapagkat nandito na ang ating... Kapag ako naupo sa pwesto at naging mayor ako, sisiguraduhin ko sa inyo, ang kauna-una ang makakabangga ninyo! Pinatakbo ka namin para sa pamilyang ito, hindi para sa mga ambisyon mo. Tatanggalin ko ang lahat ng eskaluwag! At ikaw, ang uunahin ko! Para dito pa lang, tatapusin ang dahil ka! Sige, putok mo! Sinasabi ko sa'yo, Roberto, hindi ako nakahandang matalo sa eleksyon ito. Pag nanalo si Tanggol ng eleksyon na to, gaganti siya sa akin. Hindi na kayo makakabalik sa munisipyo! Yung Maritas na yan ang umalis sa baba! Pagkanak ngayon, magdobling ingat ka. Kayo nang bahala. Gagawin natin pinag-uutos ni Mayor. Huwag niyo akong bibigyan. Sigurado ko ngayon, magpaplanuhin nila ang buhay mo. Natuluyan na talaga yung ate mo. Napaliw na talaga palibhasa, dugong Montenegro. Tsaka yung mga pinagsasabi niya doon, sa presinto, sigurado na apektuhan ng boto sa atin ng mga tao. Yung meeting de avance nila Tanggol, yun na yun eh. Kung di ka pumalpak doon, kuya, di sana wala tayo sa problema to ngayon. Kasi naman, Roberto, yung mga taong kinukuha mo, nakita mo ba itsura ng mga yon? Halatang-halata naman eh. Hindi nila gagawin ng maayos yung mga inuutos mo sa kanila. Ang priority natin ngayon, damage control. Kailangan mapalabas natin na puro kasinungalingan ang pinagsasabi ni ate at siya ay nababaliw. Jackie, ito na yung tamang panahon para pagalawin mo ang mga tao mo. Kailangan mabura sa isipan ng publiko lahat ng paninirang ginawa ni ate sa atin. Imposible. Imposible ang hinihingi mo sa akin, Roberto. Paano yung issue tungkol sa'yo, ha? Paano ko tatapunan yun? Ang problema ko yan. Ang sarili kong buhay, akin lang yan. Huwag na huwag mo kong pangunahan kung ano man ang plano kong gawin para malutas yan. Alam na ng buong mata ang sikreto mo, Roberto. Maniwala man sila o hindi. Kaya hindi na personal to. Damay-damay tayong lahat dito. Don't pass the burden of your identity to Ma. Is it true? Lahat ng mga sinabi ni Tita Olivia, totoo ba yun? I'll say something. Gosh, I thought you were perfect. I'm so stupid. Dahil lang doon, iba na ang pagtingin mo sa pagkatao ko. I don't think you understand what's going on, Kuya. Yung sisira sa pamilya, yung sikreto mo. But most especially, ako yung masisira dahil dyan! You ruined everything for me! Your stupid reputation now! Oh! 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 Wala kang karapatang sabihin sa akin. Dahil kung wala ako, wala ka. Wala kang inambag sa pagbuo ng pagkatao ko, Kuya. I'm so grateful that you're not my father. Dahil ikaw pala yung ama na naniningil. And I don't owe you nothing. I don't owe you anything! You don't owe me anything, brother. You owe me everything. Because I need you. And I'll make sure
I will never, ever forget that! Olivia. Passport, boarding pass, visa, palabas ng bansa. Delikado ka dito, ma. Hindi ka titigilan ni Gustavo. Saan ako pupunta, Olivia? Italy. Ayos na ang lahat doon. Meron akong kaibigan doon at siya ang mag-aalaga sa inyo habang nagpapagaling kayo. Kahit na malayo ako, nakatutok ako. I'm just a call away. Sumama ka sa akin, Olivia. Please. Ipapanalo ko muna ang eleksyon. Di ba yun naman ang gusto nyo? Susunod ka agad ako dun, ma. Pagkakasama ulit tayo. Huwag kang mag-alala, ma. Igaganti kita sa mga gerero at kay Matilde. Olivia. Noon pa man, nagmamalaki kita. Katulad talaga kita. Laging tinatama ang mali. Para makuha ang gusto. Ako ang tatapos sa misyon mo, ma. Babawiin ko ang lahat ng ninakaw nila sa inyo. Lahat ng pinaghirapan niyo. Pagbabayarin ko si Gustavo sa lahat ng kasalanan sa inyo. Make them suffer, Olivia. The way I did. Please, and more. Pinapangako ko sa inyo. When I see you again, ako na ang mayor ng Manila. Take care of yourself. It's okay. It's okay. Mama, Roberto, anak. gusto ka na, Mama? Tumawag ako dahil magpapaalam ako, anak. Aalis ako. Magpapakalayo-layo muna. Pupunta sa lugar na siguradong ligtas ako. Mama, hindi mo kailangan lumayo. Ligtas ka dito sa bahay. Protektahan kita. Hindi. Hindi, Roberto. Pinagtangka ng buhay ko ng papa mo dahil kay Matilde.
Ano? Totoo, anak. Roberto, huwag mo sanang kalilimutan na ikaw lang ang nag-iisang tunay na gerero. Ikaw lang. Misyon mo na kunin ang lahat na yaman na para sa atin. Kunin mo lahat na yaman na ninakaw ni Matilde. Papangako ko yun, Mama. Roberto, anak. Tandaan mo palagi ito. Pinagmamalaki kita palagi. Dahil sa mga sakripisyo mo. Sa lagi mong pagpaparaya na walang tanong-tanong. Ikaw ay ikaw, Roberto. Kahit gano'n ang trato sa ni Gustavo. Huwag mo sanang kalimutan. I'm so very proud of you. Roberto, mag-ingat ka palagi, anak. Mahal na mahal kita. Mahal din kita, Mama. Paghihiganti kita, Mama, sa lahat ng hirap na dinanas mo sa Papa. Pangako yan. Parating sa tanggol! Magsikalat kayo! Bilis! Bravo! Pasensya ka na, Martes. Pero bilin ni Tanggol. Ilayo ko na kayo dito. Maniwala ka sana kung alam niya ang ginagawa niya.
Tumawag ka ng backup. Hindi natin titigilan hanggat di natin papatay ang hayop na tanggol ito. Kailangan namin ng backup. Pumunta na kayo sa tulay. Ngayong Martes na. Babayaran nila lahat ang ginawa nila sana. Kalimutan niyo ang buong pensyon! Patayin niyo lahat! Let's go, boys! Walang magpapahuli ng buhay. Pedro! Ako ang magiging kamatayan mo! Sige! Magkita tayo sa impyerno! Face us already! Kaninong angkan? Dito ko na kayo ilinibay mga girero! Tara na, tumakas na tayo! Ang malalagasan. Mahina kayo mga girero! Panatan na natin! Hala! Ayan na yung si Tanggol! FPJ's Batang Quiapo. हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे और हम शुरू से जो है वो पाकिस्तान के बड़े बड़े जो सियासतदान अभी तक गुजरे हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा और उनकी फ़ैन फॉलोइंग के बारे में बताऊंगा, वो कितने फेमस थे और उनके कौन कौन से ऐसे बातें थी जो कि लोगों को ज़्यादा पसंद थी। सबसे पहले दोस्तों, हम पाकिस्तान बनने से बात करें तो कायदे आज़म जो कि हमारे रहनुमा हैं और इस पाकिस्तान के कायद हैं जिन्होंने इस पाकिस्तान को तख्लीक किया, तो वो तो हमेशा इस सफ़ में अव्वल पे रहेंगे। बाकी जितने भी पॉलिटिक्स हैं वो पाकिस्तान बनने के बाद के हैं, तो हम आज बात करेंगे पाकिस्तान बनने के बाद के पॉलिटिक्स की। दोस्तों, सबसे पहले जनरल ज़िया-उल हक़ आते हैं जो कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लेके आए थे। जब पाकिस्तान की हुकूमत जमहूरियत जो थी वो इस कदर उसमें फसादात डाल गए थे कि पाकिस्तान के एक आयन के तहत फिर पाकिस्तान को पर कब्ज़ा, हुकूमत पर कब्ज़ा जो है वो फ़ौज ने किया था, तो उनका ये मार्का था। ठीक है, उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं जो कि एक ऐसे रहनुमा थे जिनकी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग थी, बड़े बहादुर इंसान थे। लेकिन मसला ये है, पाकिस्तान में कोई भी अच्छा पॉलिटिक्स, कोई भी अच्छा सियासतदान आया है तो उसका जो एंड है ना वो बुरा हुआ है। पहली तो बात यह है कि पाकिस्तान को बहुत कम अच्छे पॉलिटिक्स और अच्छे सियासतदान मिले, कोई 2-3 होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जो वाक़ईतन पाकिस्तान के लिए सोचते थे और उन्होंने पाकिस्तान के लिए दर्द रखते थे और पाकिस्तान के लोगों के लिए उन्होंने काम किया अपने मुफादात को छोड़कर। जुल्फ़िकार अली भुट्टो बहुत बहादुर इंसान थे, उनकी तहरीक बहुत अच्छी थी और उनका एक नारा था, रोटी कपड़ा मकान। इसकी वजह से वो पॉपुलर थे और आज की पीपल पार्टी जो है वो उसी नारे को लेकर आगे चल रही है, लेकिन सिर्फ नारा ही रह गया, उसमें वो काम नज़र नहीं आते। उसके बाद दोस्तों, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी बेनज़ीर भुट्टो पाक कमाल लीडर थी, एक बहुत अच्छी सियासतदान थी और बहुत अच्छा दौर गुज़रा उनका भी। ठीक है, बहुत अच्छी उन्होंने सियासत की। आज भी दुनिया उनको बड़ा याद करती है, उनके जो मद्दाह हैं आज भी पीपल पार्टी की जो जितनी भी अभी भी उनकी जो बची कुची जो लोग हैं उनके पास, जो वोटर हैं उनके पास, वो सिर्फ़ और सिर्फ जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो की वजह से। बेनज़ीर भुट्टो की चलाई हुई स्कीमें जो कि लोगों को, गरीब ख़ानदानों को पैसे आज भी मिल रहे हैं, मंथली 12,000, किसी को 10,000, इस हिसाब से। तो एक बड़ी हमदर्द लीडर थी, वो भी लोगों के लिए काम किया उन्होंने और रोटी कपड़ा मकान जो नारा था उस पर उन्होंने अमल करके दिखाया। लेकिन उनका भी, जितने भी मैं आपको बता दूं पाकिस्तान में जितने भी अच्छे लीडर आए हैं, उनका जो इख्तिताम है वो बहुत बुरा हुआ है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई, ठीक है, ओपोजिशन की चालों की वजह से या जो भी आप समझ रहे इदारों की वजह से। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो वहीं बहुत अच्छी लीडर थी, उनको
गोली मार दी गई, उनको मरवा दिया गया। लोग ये कहते हैं कि उनके मियाँ आसिफ अली जरदारी ने उनको मरवाया, लेकिन हकीकत तो रब ही जानता है, इस पे आज तक कोई कुछ नहीं पता। ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों 2 ख़ानदान हुकूमत करते रहे अब तक। बेनज़ीर भुट्टो के बाद पीपल पार्टी, नून लीग, पीपल पार्टी, नून लीग। 27 साल की जद्दोजहद के बाद एक नया लीडर हमें मिलता है जिसका नाम इमरान खान होता है, और एक ऐसा इंसान जो कि पहले ही पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन कर चुका था। पाकिस्तान को क्रिकेट का वर्ल्ड कप जितवाने के बाद सियासत में कदम रखा, और आज हाल ये है कि उनको जेल में बंद हुए तकरीबन 2 साल से हो गए। इमरान खान जिन्होंने कौम को एक शऊर दिया, कौम को समझ दी, न्यू जनरेशन में एक जज्बा पैदा किया कि वो अपने मुफादात के लिए खुद लड़ें और अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएं, और तहरीक चलाई जो कि पिछले लोगों ने अमल भी किया। तो आज आप देख सकते हैं दोस्तों 2 साल हो गए हैं कि इमरान खान जेल में बंद हैं। ठीक है जी। और उनका जो इख्तिताम है वो बहुत बुरा होने जा रहा है, और अभी ऐसा लग रहा है कि शायद बड़ा मुश्किल है कि इमरान खान जेल से छूट पाए। उनका भी इख्तिताम वही होगा जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, बेनज़ीर भुट्टो का हुआ था। ये है हमारे मुल्क का अलमिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हम मिलते हैं जी अगली वीडियो में। इस वीडियो को नाम देते हैं, क्रेडिट देते हैं कैदी नंबर 804 का। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।